and my salary was 1,500 rupees at that time. So हाजी 2300 रुपए 2300 रुपए अगर आप ओपन माइंड से नहीं आते हो तो आगे बात नहीं बनती। तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट इज कि लाइक यू सेड, आपका पैशन है क्या है यहाँ पे, आप क्या ये करना चाहते हो क्या। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फाइंडिंग अ जॉब एंड देन मेरे को जॉब मिल गई मैं खुश हूँ, नहीं, आपको काम भी करना है, आपको डिलीवर भी करना है। Hello and welcome back to the channel, ladies and gentlemen. Welcome to the new episode of the gaming podcast with Underdog. आज हमारे साथ है one of my good friends, Ranbeer Hora, Praji, founder and MD at Godspeed Games. Praji, welcome to the podcast. थैंक यू यार। थोड़ा सा Godspeed Games के बारे में बताओ और आपके जर्नी के बारे में बता दो ऑडियंस को। Okay. So first of all, thank you, Weber, for having me here. यहाँ पे भी बात कर रहे हैं तो काफी अच्छा फील आ रहा है। It's like we are sitting just around each other and talking. I mean, coming back to the what we are, why we are here. So let's dig into what Godspeed is all about, right? So मैं बहुत कम शब्दों में अगर Godspeed के बारे में बोलूँ तो we are a predominantly a services company. So Okay. we have been doing game services for almost like 10 plus years now. And Godspeed, what started just as a QA services company, हम शुरुआत में हमने सिर्फ QA services किया for 2 years, and then we started doing game development. Slowly, building up skill sets, building up talent pool, and then we started doing porting. Then we started doing live operations and so on. Today, if you ask me, we are close to around 150 people studio in Pune. And again, like 2 लोगों से 150 लोगों की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। हाँ, ये एक्चुअली मालूम नहीं है ज़्यादा लोगों को। पुणे में इतनी सारी कंपनीज है जो हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रही है बिल्कुल। एंड गॉडस्पीड इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज। एक्चुअली मैं एक वीडियो भी अभी पोस्ट करने ही वाला हूँ कल परसों में, जहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट दीज कंपनीज कि Okay. कौन से जगह पे कौन सी कंपनीज है सिटीज़ की। Okay. मेजर रीज़न यही है कि मतलब लोगों को पता नहीं है आपके बिल्कुल। अराउंड भी ऐसी अमेजिंग कंपनीज है जो इतना काम कर रही है 150 स्ट्रेंथ की। एब्सोल्युटली अमेजिंग। नहीं, आई मीन दिस इज समथिंग दैट हम लोग खुद भी बोलते हैं कि यार हमने ज़्यादा पब्लिसिटी की नहीं यार, हमने ना काम पे फोकस किया कि क्या करना है उस पे पहले फोकस करो, नाम तो अपने आप हो जाना है। अगर करेक्ट। कुछ अच्छा काम करेंगे नाम तो अपने आप आ जाना है। तो वो पहला फोकस जो था वो काम पे ही था। वो अप्रोच भी काफ़ी सही है, यानी अंडरडॉग अप्रोच है वो तो। एब्सोल्युटली आई बिकॉज़ वो एक स्टार्टअप मेंटालिटी बोल लो या फिर एक कल्चर बोल लो जो बिल्डअप होता है। या एंड अगर आपका काम आपके बारे में बात कर सकता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, राइट? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आपकी फिर आगे जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ तक गॉड कैसे बना? Okay. I think Godspeed bana, to be fair, if it might start with my story personally, because मेरी story थोड़ी और interesting हो सकती है अगर बनाने जाए तो। वो एक हम वो छोटी सी एक जुमलाबाजी भी करते हैं ना, life without a story is not a life, right? So 100%। so story है। So I would start with probably my story, if that's okay. 100%। या So so या so so I mean, gaming for me, if you ask me, it started in 2005. So I was doing मेरे father का catering and event management का business है। ओके। So I was working alongside him, but all of a sudden जॉब करने की इच्छा हुई। हमने कहा चलो एक जॉब की जाए। तो I did work for ICICI Bank initially. That was my first job, and my salary was 1,500 rupees at that time. So हाँ जी 2300 रुपए 2300 रुपए। so it was a sales gig, and so after that, वो करते करते we I came across few friends who were working in BPO sector, and they used to share वो bigger pictures, यार 25,000 कमा रहा हो, 50,000 कमा रहा हो, those kind of stories were there, आई नो। and that kind of gave me यार छोटे शहर में रहकर शायद कुछ हो ना, so let's just take a leap. And what we did was हम कुछ 8-10 लड़के एक साथ मिले, and then we went to Delhi to find a job in a BPO. That time, because it was a craze at that time. और आप पुणे पुणे में थे तभी भी? No, actually, I'm born and brought up in Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ से आप दिल्ली गए? जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ से मैं दिल्ली गया। वहाँ आई थिंक my first interview was with a company called Ionizer. ओके। It is still there. It's one of the biggest companies in Noida sector.
दे हैव अ ह्यूज कैंपस, सो दे वो क्या काफ़ी सारे बीपीओ ऑपरेशंस उनके यहाँ हैं, एंड दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे बस इतना पता था मैं बीपीओ जॉइन कर रहा हूँ, बट फॉर्चुनेटली फॉर मी आई लैंडेड अप अ जॉब इनटू अ गेमिंग प्रोसेस। नहीं, बट वो टाइम पे वो भी था ना, आई ऑल्सो रिमेम्बर कि वो बीपीओ यानी बड़ी बड़ी सैलरी टाइप्स वो भी था, बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो 22 से 25 के ब्रैकेट में आप गिर जाते थे हाँ सीधा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेंटालिटी वही थी यार उस समय, क्या मतलब यंग एज में होता है ना कि पैसा कमाना है बस। Yeah, तो हम वो सोच के गए थे, बट लाइक आई सेड, डेस्टिनी लिखी रहती है। सो माय फर्स्ट जॉब वाज देन गेटिंग इनटू द गेम्स दैट साइड, एंड द काइंड ऑफ गेम्स दैट आई सॉ देयर, और एंड दैट वाज एक्चुअली अ टाइम जब हम फैमिली को बताने में सोचते थे यार क्या बताएं, मैं क्या काम कर रहा हूँ। Because I started as a player support guy, so yeah. and I वहाँ पे because 24/7 process था, और मैं रात को जग के काम करता था। I was supporting player tickets for MMOs, the games like EverQuest 2, Matrix Online, Star Wars Galaxies, those ये kind of things. ये किसी और के लिए बना रहे थे? दिस वाज This is all Sony Online Entertainment's project, ओके, and so that is where I started my journey with this kind of projects. नाइस। एंड तू घर पे जब बताना रहता था, तू करता क्या? तो मैंने कहा यार क्या बताऊँ इनको, मैं क्या करता हूँ? तो उस समय भी ना द सेफ वर्ड इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। दैट्स द सेफेस्ट वर्ड, आप घरवालों को ये बोल सकते हो मैं सॉफ्टवेयर में काम सॉफ्टवेयर में करता हूँ मैं। हूँ। आई आई रिमेम्बर व्हेन इंडिया गेम्स ने मुझे फायर किया था 2007 में। 4 महीने की जॉब की मैंने सिर्फ इंडिया गेम्स में, मुझे फायर किया। मैं पूरे रास्ते रोते घर आ रहा हूँ। दरवाज़ा खोला तो मैंने मॉम को बताया, तो मॉम स्टार्टेड लाफिंग, शी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग कि भाई ये एटलीस्ट वापस सॉफ्टवेयर में आएगा अभी, ये दिमाग से ये गेम का कीड़ा No निकल doubt, चुका है। no doubt उस समय because families, obviously that was a different time period already, right? या अब तो काफ़ी, I mean, we have seen a lot of changes even in parents, even in families now. So that's how my journey started, and then from player support I learned my bit into game QA. नाइस। I moved on to Game Shastra in Hyderabad. When Game Shastra started in Hyderabad, so that we were the initial team members there. So there I started doing the QA side of things. वहाँ काफ़ी grow हुआ, 3 साढ़े 3 साल काम किया वहाँ पे, खुद को grow किया from a junior level to a managerial level. I also did sales for them for 6 months. I did only focused on sales, getting new leads, bringing new sales projects and stuff like that. Then I got an opportunity in Pune, and this, I would say, this was a game changer for me still, because when you work for a services company, you have I don't know, this has been our experience, but you have a different बिहेवियर ऑन द फ्लोर। क्लाइंट से ज़्यादा बात करने नहीं मिलता, इंटरैक्शन करने नहीं मिलता। व्हेन यू आर अ जूनियर पर्सन, या आपको कोई आता है तो फ्लोर बोलो बिल्कुल सीधे बैठो, हिलना नहीं है। दोस काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर इनिशियली, राइट? या But then this company which I joined in Pune, Lightning Fish Games, so they were it was a UK based company, so they started their studio in Pune. आई थिंक दैट्स वेयर आई वुड से जो गॉडस्पीड का भी बीज वहीं से ही बोया गया है। बिकॉज वाइल वर्किंग फॉर दैट कंपनी, आई यूज्ड टू प्ले गेम्स काउंटर स्ट्राइक एंड सीओडी एंड अदर स्टफ, राइट? बट मैं खेलता था गॉडस्पीड एज एन एलियास। ओके। दैट वाज माय गेमर टैग, यू कैन से। हाँ, सो तो दैट वो वाज माय गेमर टैग। तो वही है, मतलब मैं ऐसे अपने अपने लेवल पे जितने लोग हैं ना, जो जिन्होंने अपना अपना कुछ ना कुछ ब्रांड स्टार्ट किया है ना, वो वहाँ से ही आता है एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल, एलियस में बिल्कुल। मेरा अंडरडॉग भी वहीं से आया सही है, सही है। नाउ सो यू कैन रिलेट कैसा होता है ये स्टोरी, राइट? So what है। that happened was, वहाँ काम करते करते ही, I met Druhin as well there. ओके, My partner, who is my current partner as well. So I met Druhin as well. And उस समय वो गेम मेकर का इनिशियली फीवर आया था, खुद आई नो, के गेम बनाओ, आई छोटे नो। छोटे गेम्स बनाओ, वो वाली चीजें स्टार्ट हुई थी। एंड मी, हु इज समबडी फ्रॉम नॉन टेकी बैकग्राउंड, कॉमर्स ग्रेजुएट आदमी यार, कॉमर्स ग्रेजुएशन किया है और एमबीए किया मार्केटिंग में, और अभी बैठे हैं यहाँ पे। सो इट्स अ डिफरेंट, उस समय प्रोग्रामिंग मेरे बस की नहीं थी। हाँ, तो गेम मेकर लगा यार सेफ बेट है, करते हैं। तो कुछ आई वुड से कहानी किया है, आर&डी किए उसमें, एंड देन दैट्स व्हेन आई थॉट ऑफ रजिस्टरिंग दिस डोमेन godspeedgames.com. ओके। So while I was working with Lightning Fish Games, this domain was already there. विच ईयर वाज दिस? This was 2010. 2010। नाइस। 2010, yeah. So 2012 में when Lightning Fish closed their studio in Pune, yeah, बट वन सेकंड, जब भी sure, आपने वो 2010 में डोमेन रजिस्टर किया, राइट? जी, सी आई थिंक वो टाइम पे फ्लैश गेम्स, नॉर्मली फ्लैश गेम्स चलते थे। मोबाइल इतना था नहीं, मोबाइल था लेकिन सिम्बियन फोन्स पे था वो, हाँ जी। कीपैड वाले। सो विद गॉडस्पीड एज अ टाइटल, राइट, व्हाट वाज योर
विजन कि आपको कुछ तो दिमाग में आया रहेगा। लाइक सी मेरे टाइम पे मेरे को लगा था कि मैं फ्लैश गेम्स जो मैं बना रहा हूँ गेम्स टू विन में, वो मैं बना के और बेच सकता हूँ लोगों को बाहर, थोड़ा ज़्यादा कमा के। ये मेरा सिंपल फंडा था। तो आपका उस टाइम पे जॉनरा क्या था, कैटेगरी कुछ तो दिमाग में रहा होगा कि ये कैटेगरी को कुछ तो करना है करके। एक्चुअली इट्स सिमिलर टू व्हाट यू सेड। फ्लैश गेम्स का ही दिमाग में था और ब्राउजर बेस्ड गेम्स का ही दिमाग में था उस समय भी, ओके। बिकॉज दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वर्किंग एट दैट टाइम। एब्सोल्युटली। सो वही दिमाग में लेके चला था। और मगर हुआ क्या था कि बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस इनटू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कंसोल्स पे भी बहुत काम किया, डिफरेंट गेम शास्त्रा में काफी काम किया कंसोल्स पे, फिर लाइटनिंग फिश गेम्स में काफी काम किया कंसोल्स पे। या और बिकॉज वो आप व्हेन यू आर द इनिशियल मेंबर्स ऑफ अ स्टूडियो, सब कुछ आपको करना पड़ता है। तो काफी सारी लर्निंग होती है वहाँ पे। आप क्यूए भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं। आप आई मीन पोछा भी मार रहे हो, झाड़ू भी बिल्कुल, मार। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, सब काम किया है वहाँ पे। हमने डांस भी किया है बिकॉज़ लाइटनिंग फिश गेम्स में मोशन ट्रैकिंग के गेम्स पे काम होता था, किनेक्ट मोशन ट्रैकिंग का और प्लेस्टेशन मूव के मोशन ट्रैकिंग का काम होता था। राइट। सो हम एक ग्रीन रूम बना हुआ था हमारे लिए स्टूडियो में, वहाँ पे डांस करते थे खड़े होके काफ़ी देर तक। एज़ अ क्यूए यू हैव टू डू एवरीथिंग राइट। या सो वो सब वहाँ से थोड़ा वो आया कि यार कुछ बनाना चाहिए खुद का भी। या But I think the goal for me was always because I've done business in the past. Because my family is into business, तो मैं दिमाग में हमेशा ये था कि यार बिजनेस तो करना है। नौकरी में जिंदगी भर नहीं कर सकता, या धंधे पे जाना ही जाना है मेरे को। तो वो वो एक दिमाग में बार, था कहीं ना कहीं। नहीं बंदा एक बार उसमें गया तो ही कांट कम बैक, पहली तो चीज़। एंड देन Yeah. इफ़ यू हैव अ फैमिली बैकग्राउंड, फिर तो आप भूल जाओ, फिर तो नहीं होगा वो। नहीं, एक पता नहीं एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता था, एक अलग किक मिलती है। या कि जब आप खुद का काम कर रहे हो, रोज नए चैलेंज आते हैं राइट। यू करेक्ट। हैव टू फेस ऑब्वियसली, जो नौकरी में भी देर आर एवरी डे देर आर न्यू चैलेंजेस। या बट इन अ बिजनेस द काइंड ऑफ challenges you face, it's like you're learning everything, something new every day. So करेक्ट। तो वो दिमाग में था। So what happened was Lightning Fish Games closed their studio in 2012, and that's when I was out of job. I think almost for 3 months I was out of job. I was looking out for different job opportunities at that time, and पुणे छोड़ने का मन नहीं किया। सो दिमाग में ये आया यार कि व्हाट कैन आई बैंक ऑन टू एट दैट टाइम। एंड तब दिमाग में आया बिकॉज व्हाट इज माई स्किल, व्हाट डू आई ब्रिंग ऑन टेबल। So my experience was completely game QA. So I said, why not start a game QA company? Again, for me, the final, I would say, वो कील ठोकने वाली बात है। I won't name the company actually, but I gave an interview in a Pune-based company here for a role of QA manager, and मेरा पूरा सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, हम सैलरी तक डिस्कशन पे पहुंच गए थे। ऑफ ऑफ रिकॉर्ड में आपको 3 नाम बोलूँगा, उसमें से एक अभी कुछ नहीं बोलने वाला एक मैं। नाम पक्का है वो। So what happened was, on the final round, so they went inside, they came out, the person came out, and he just asked me, यार सदार ये बता, ये जो डोमेन है किसकी है? And I said, ये पाजी मेरे नाम पे ही है। Uh, and that's where they cut me off. They said like यार नहीं, because they were also into a services line, so they said क्या तू हमारे क्लाइंट लेके भागेगा यार। So घर आया, बुरा भी लगा बिकॉज फाइनल तक चला गया था, बुरा भी लगा। बट देन समथिंग होता है ना, जो होता है भले के लिए होता है वाली सोच जो है। या या तो कुछ ऐसा लगा कि यार शायद बिना कुछ किए भी नाम है मार्केट में, तो एब्सोल्युटली। कुछ करा जाए उसके बाद नाम बनाया जाए। So I think that's how the story of Godspeed began. And I mean, obviously each company has their own set of struggles. या So I started this from my two-bedroom apartment. ओके। Almost for 2 years, I mean, I had, let's say, 5 to 10 members only who were working with me for Game QA. बट यू Uh, स्टार्टेड विथ द्रोहिन, ये no, चीज़ no, कि no. आप This was सिंगल और मैं कुछ लोग। सिंगल मैं सिंगल स्टार्ट किया था 2012 में इसको, ओके। एज अ प्रोप्राइटरशिप ओके। फॉर्म। बिकॉज ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस समय प्राइवेट लिमिटेड कैसे बनाना है, क्या कैसे करना है। आपकी आपकी और मेरी स्टोरी इतनी सिमिलर है ना, एक एक एस्पेक्ट में। बट फिर मतलब आपने ऑफिशियल लाइक प्रोफेशनल हायरिंग की पहले 2 साल के लिए जो भी आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो लाइक वी somehow got a project, very good project, first project at हाँ, मैं उसी Deepa. के ऊपर आने वाला था, Okay. क्योंकि सी द थिंग इज, मैं अभी जैसे यूट्यूब पे ना बहुत सारे एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स है, ऑनेस्टली बहुत टैलेंटेड है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हम जिस टाइम पे एंटर कर रहे थे हमें जितना नॉलेज नहीं था। आज बिकॉज ऑफ इतनी सारी चीज़ें इंटरनेट पे है, टूल्स फ्रीली अवेलेबल है, ये लोग काफ़ी एडवांस्ड है। एंड देन एब्सोल्युटली। व्हेन दे थिंक ऑफ
कि मैं स्टूडियो स्टार्ट करूंगा, आई थिंक एट दिस पॉइंट इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि या इनके पास सब कुछ है अभी करने के लिए। बट एक चीज पे ये लोग बहुत दफा अड़ जाते हैं, एंड देन आई ऑल्सो गेट दीज क्वेश्चंस टू माई यूट्यूब एंड अदर लिंक्डइन के यहाँ से कि हाउ डू वी गेट दैट फर्स्ट क्लाइंट। ये सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो ऑडियंस के लिए, कि आई थिंक आपको कैसे मिला, एंड देन आपके हिसाब से एक्सपीरियंस वाइज क्या करना चाहिए एक बंदे ने। I think for me, my past experiences played a major role. Like I mentioned, मैंने गेम शास्त्रा में कुछ टाइम के लिए सेल्स भी किया था। या सो मेरा काफ़ी अच्छा नेटवर्क बन गया था लोगों के साथ वहाँ पे भी, और प्लस जो एक ग्लोबल लेवल पे जो आई वुड से एक्सपोजर लाइटनिंग फिश गेम्स पे काम करने के बाद मिला, वो आई थिंक दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज वी यूज्ड टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद आई वुड से यूके बेस्ड पीपल, राइट? एंड राइट। जो पब्लिशर्स, उनके भी जो पब्लिशर्स थे, वो कहीं पे भी शाई अवे नहीं होते थे। दे यूज्ड टू आस्क कि तुम लोग डायरेक्टली बात कर लो। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ, नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग हुआ। तो पहला क्लाइंट भी आई वुड से कि मुझे लाइटनिंग फिश गेम्स के ही कुछ कनेक्शंस थे। अंडरस्टूड। उनके कनेक्शंस के थ्रू ही मिला, बिकॉज उन्होंने गेम क्यूए जो मैं मेरी टीम करती थी, या मेरी मतलब लाइटनिंग फिश में जब हम करते थे, सो दे वर वेरी हैप्पी विद दैट वर्क। And when I told them that I've started a game QA company, they said okay for sure. I mean तेरा काम तो सबसे अच्छा लगता था यार, तो तेरे लिए तो कुछ ना कुछ करना बनता है। राइट। तो they can, one of those guys, I can still name him. He's still there. So Mr. Nick Cote, he's still on LinkedIn with me, connected on LinkedIn with me, and we still chat a lot. He got me my first break, I would say. He introduced me to a exercises based company. अभी अभी आज nowadays you see there is ads on Facebook and stuff. वो screen लगी हुई है, bicycle कर रहे हैं. आई नो। That time that was my first project in 2013. ओके, वो टेस्टिंग वाला था, क्यूए करने के। Exactly, ओके। exactly. So वो software, there was a UK based company, Extreme. Uh, you can still search Extreme करके बाइक्स आती थी उनकी वो। हाँ। एंड दैट वाज अ टाइम जब मुझे ये भी नहीं पता था कि बाहर से कुछ इंपोर्ट करने के लिए मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी चाहिए रहता है। एंड यू वोंट बिलीव, आई इंपोर्टेड 2 बाइक्स फ्रॉम यूके, ओके। एंड वो अराउंड लेट्स से 12 लाख के आसपास की कॉस्टिंग थी, वाओ। without import export code, without any knowledge of how to get a product release from customs. And around 15 days it took me to and fro to Mumbai customs, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। मैंने वकीलों से बात किया, मैंने सीए से बात किया, सबसे बात किया, एंड देन somehow I got those shipment freed from them, and I think that was the first project for us. So Mera, if you ask me, if you are looking at from a services perspective, even for any business, even if you are creating a product as well, या। or you need to network. I think that is the key. Networking सबसे ज़्यादा important है आपके लिए. Not just with client side से अगर आप देख लो तो, but in terms of knowledge sharing as well, because nowadays like you said, बहुत talent है industry में, नए नए बच्चे इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं कि हमको खुद को पता नहीं चलता यार ये कब सीख के आए हैं। करेक्ट। सो वो आप अब जब तक अपने फेलोज डेवलपर्स से या इंडस्ट्री प्रोफेशनल से लिंकअप नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चल जाएगा कि इंडस्ट्री में कर हो क्या रहा है, या मुझे यहाँ से वहाँ या नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए क्या चाहिए। राइट। तो आई थिंक नेटवर्किंग फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट की। Tools nowadays, like you said, it's readily available. Knowledge base online काफ़ी available है, और thanks to AI as well, बहुत कुछ थोड़ा सा और ये थोड़ी सी राह आसान हो रही है। I won't say कि completely आसान हो रही है, because दिमाग तो आप ही को लगाना है। या AI काम करेगा, but AI से काम आपको करवाना है, वही right? है ना कि कितना एआई कितना स्मार्ट है, इससे ज्यादा तुम कितने स्मार्ट हो कि Exactly. एआई को यूज कर पाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वो चीजें हैं, आई फील। तो मैं कुछ स्किल्स में एक्चुअली मैं बोलता हूँ, लाइक नेटवर्किंग फॉर मी इज इज अ की फॉर एनी बिजनेस, या be it टॉप। services, be it product. If you're developing something, you need publishers, you need influencers, you need marketing professionals, how to do monetization. So your networking is the key there. या Next thing for me is ability to sell. सो इन अ वे आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, आप बेच रहे हैं कुछ ना कुछ, या चाहे आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं जॉब के लिए, तो आप खुद को सेल कर रहे हैं इंटरव्यूअर को, राइट। अपने स्किल्स को सेल कर रहे हैं। सो वो आई थिंक इज अ की फॉर बिजनेस। चाहे अगेन लाइक बी इफ यू आर अ प्रोडक्ट कंपनी और इफ यू आर अ सर्विसेज कंपनी, दिस इज अ कॉमन स्किल और स्किल सेट विच यू रिक्वायर फॉर श्योर। या एंड अगेन एब्सोल्युटली। लाइक बाकी बिलीव इन योर सेल्फ,
अगर आपको पता है कि दिस इज समथिंग दैट इज योर पैशन और दिस इज समथिंग दैट इज योर फोकस, Yeah. पूरा अपना 100% दो, फॉर श्योर यू विल कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल, एंड देन होता है वो बहाव के साथ चलते चलो तो कहीं ना कहीं किनारा तो मिल ही जाता है। मिल जाएगा। तो दैट वाज द होल मंत्र आई यूज्ड टू फॉलो एक्चुअली, कि बहते पानी में तैरते चलो भाई, सीखते रहेंगे। एक ठिकाना बन जाएगा कहीं ना कहीं। या So नहीं these are the और common things I would say, या which is very important. Even when you start at the early stages, I think networking for sure is a key, and then how you sell yourself, how you can tell what you do to different people is very important. या आई थिंक सी यंगर जनरेशन में भी एक्सपेक्टेशन जितना फास्ट ये चीज जितनी फास्ट जा रही है ये चीज़ है, उतनी एक्सपेक्टेशंस भी उतने ज़्यादा बिल्कुल। क्विक चाहिए मतलब लोगों को भी, और ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा होगा Yeah, बिकॉज ये एक चीज़ ऐसी है ना, ये आपके इंटरपर्सनल स्किल्स पे मैटर करेगी, आपके absolutely. आपकी ह्यूमिलिटी पे, आप किस तरीके से अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर आपको वो सब मिलेगा। वो भले मैं 4 दिन में बनाना सीख जाऊँ गेम, पर वो रिलेशनशिप बनाने के लिए तुमको साल ढालना ही बिल्कुल, पड़ेगा बिल्कुल, उसके अंदर। बिल्कुल, आराम से, आराम से। अदरवाइज यू डोंट एक्सपेक्ट कि यार मैंने स्टूडियो स्टार्ट कर दिया और मेरा हाँ जी, फर्स्ट क्लाइंट मेरे को कल मिल गया, हाँ जी। है ना। मेरे केस में भी वो हुआ था कि मैं गेम्स टू इन छोड़ के हंगामा में सिर्फ नेटवर्क बनाने गया था। मैंने पूरा 1.5 साल हंगामा में सिर्फ नेटवर्क बनाने में स्पेंड किया, और मेरे फर्स्ट कुछ क्लाइंट्स थे वो हंगामा से और गेम्स टू इन से ही आए थे Okay, जिन्होंने okay. गेम दिया था। सो वही है मतलब इवेंचुअली देयर इज नो शॉर्टकट टू इट, बट Yeah, yeah, और ये इवेंट्स में जाना कॉन्फ्रेंस में आई थिंक बेस्ट है। बिल्कुल। I think because you mentioned games to win, so my first client meeting I would say was with games to win. So then I traveled to Mumbai and I met Mahesh, Mahesh एम के, Kambakone. हाँ। Yeah, MK. I met MK there, and Alok was also there. So या I met Alok there as well. So these guys, when you are nothing, when you were just starting up, everything comes as a blessing, right? या And if somebody trusts you at that time, they trusted me at that time, या when they knew that I'm starting up, so they knew that I can deliver them. I राइट। think that's where we still have a very good cordial relation, till date, या because they were the first to work with me at that time from an Indian perspective, from Indian studios perspective. या India में outsourcing होती नहीं है यार, but they used to do a lot of QA work. We did a lot of QA work for them या over the years. या क्यूए, उसी की मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी पे था कि क्यूए फिर भी ठीक है, आई मीन टेस्टिंग है ना, कि वो बहुत अभी कुछ 5-6 साल में तो बहुत सारे मैं कंपनीज देख रहा हूँ जो हाँ प्रॉपर जी। टेस्टिंग फोकस्ड होने। बट पोर्टिंग क्या है फंडा सर, लोगों को बताओ, बिकॉज सी ऑडियंस को ये भी नहीं पता है कि गॉड स्पीड जैसी कंपनी बड़े टाइटल्स पे जो पब्लिश हो रहे हैं बाहर, जो गेम ये वो लोग खेल भी चुके हैं, जो पर इनको हाँ जी, पता हाँ जी, नहीं है, हाँ जी। इनको पता नहीं है कि कुछ उनमें से कुछ गेम्स आप लोग पोर्ट करते हो। सो पहले तो आप पोर्टिंग इसको इन जनरल क्या होता है वो बताओ, और आपका पोर्टिंग से कैसे आप कितने लोगों के साथ कैसे काम कर रहे हो वो थोड़ा सा टच बेस कर आई थिंक बहुत सिंपल, अगर भाषा में अगर बोलेंगे तो पोर्टिंग, आई मीन वर्ड में ही उसका मीनिंग है। इट्स लाइक आप एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपका गेम बना है, उसको आप कैसे दूसरे अलग प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाते हैं, कैसे और मार्केट कैप्चर करते हैं। बिकॉज अगर आपका सिर्फ मोबाइल का गेम है तो आप मोबाइल से ही रेवेन्यू बना रहे हैं अभी। इफ दैट गेम हैज पोटेंशियल टू गो इनटू अ पीसी गेम, be converted into a PC game, or let's say a PlayStation game or Nintendo Switch game, I think that is where the potential is, and that is what porting does. So let's say if you have a game on PC platform, आप चाहते हैं कि वो आपका गेम जो है वो PlayStation 4 पे भी आए, PlayStation 5 पे भी आए, that's where we come into picture. दो। हम आपसे वो कोड बेस लेते हैं और हम उसको डेवलप करते हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए। There are different models to work around it. Maybe you can work on a, let's say, on a services basis. You can work on a rev share basis, and in some cases, we have also published those games. For example, Shaolin versus Wu Tang was one of those games for Nintendo Switch, which we ported to Nintendo Switch from PC, and then we published it on Nintendo. Similarly, Almighty, there are other games as well which we have done, and then self publish भी किया है उसको स्टोर पे। So अगर सिंपल लैंग्वेज में यही देखा जाए तो कैसे आप I think in recent times there's one terminology which is very I would say prominent and which is talked too often, which is cross platform. या So porting is all about cross-platform, working across different platforms. By cross-platform, obviously you have multiplayer games which are syncing together as well. So you can play a Nintendo game along with the Sony player or PC player.
सो दैट इज ऑल्सो देयर। बट पोर्टिंग का फंडा यही है कि आपका प्लेटफॉर्म एक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका गेम और भी मार्केट कैप्चर करे और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के प्लेयर्स पे जाए, एंड दैट्स वेयर द पोर्टिंग स्टूडियोज हेल्प यू आउट विद। कुछ पॉपुलर गेम्स जो नाम ले सकते हो आप अभी? We did a few horror games for like Saint Kotar is one game that we have done recently, which is kind of a horror and adventure genre. Shaolin versus Wu Tang Kung Fu, that's awesome title. It is still doing well in the US market, I would say. US और EU में कुछ regions पे उसकी sales बहुत तगड़ी है, बहुत fans है उसके. We have done a lot of adventure games as well. We are doing few games on. I mean, they're still into development right now, but we're doing games for PlayStation 5, Xbox Series X, Nice, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, all platforms. nice. I think हम लोग ज्यादा हल्ला नहीं करते, मगर अगर मैं हल्ला काउंट करो करना, सर, हल्ला करो। तो काम करो यार, हल्ला अपने आप हो जाएगा। हल्ला हम कर देते हैं आपके लिए। So I think हम लोगों ने, I believe till date around 50 odd games पे we have contributed from porting front. Yeah, last time we were discussing about this game Tropico. Yeah. I love that. I just love that. And I'm sure बहुत लोगों ने वो गेम खेला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। I think there are, I mean, the Tropico we contributed from the quality assurance front. हम्म। So, that game is there on stores and काफ़ी अच्छा गेम है। Yeah, एंड इनफैक्ट मेरी खुद की टीम ने पहले ही खरीद के खेला हुआ था, मतलब ये Tropico 5 ऑलरेडी खेला हुआ था उन लोगों ने पहले से। So right. when that game came to us and we were like, okay, सारे बच्चे वेरी खुश थे यार कि यार ये तो फॉर्चुनेटली हमारे पास आ गया। So there are a lot of different games. I can name Dungeons 3 was one of those bigger games that we have done. We have done Nice. Immortals. So there are lots of different games. I mean, मैं अगर पोर्टफोलियो किसी को शेयर करता हूँ तो बोलता है इतना काम तुम लोग किए हो क्या? मैं करके बैठे हैं भाई, चलता है। वो लेकिन वो क्यूए से हाउ डिड यू व्हाट वाज दैट फर्स्ट बेट लाइक पोर्टिंग? तो इट्स अ पार्ट, इट्स बेसिकली डेवलपमेंट ही बोल सकते हैं Yes. उसको, राइट? बट इट आई थिंक किसी बंदे ने, किसी टीम ने अगर पहली बार मतलब किया ही नहीं है ये, हाउ डिड दैट इवन गेट टू योर विजन कि ये भी कर सकते हैं? Yeah. So I think, I mean, to an extent, how we have done and how much success, उसका श्रेय I would say मेरे partner पे भी जाता है, because he's the techie या mind along with me, Dhruin. ध्रुवीन। Yeah, so he's the techie guy along with me. मैं तो धंधे वाला आदमी हूँ भाई, पैसा किधर से बनाना है मेरे को बताओ, मैं बना के दूंगा। आपने जाके बेच दिया। But how porting came actually, you can say that because we used to do a lot of work on the console QA front as well. हम्म। I think that time हमने मार्केट देखा, हमने देखा कि मोबाइल पे काफी काम हो रहा है इंडिया लेवल पे। हमने देखा कि जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे ही फोकस रख रहे हैं। तब हमको लगा कि हाउ डू वी स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपटीशन। हमने देखा कि यार कंसोल पे ज्यादा फोकस नहीं है। राइट। That's why we thought कि let's just start doing console development. We did some prototypes as well. We did kind of pitch few prototypes to some of the publishers in UK, US, different places to या show it was not about raising funds or कि मैं ये game market में लाना चाहता हूँ, but it was about creating our own portfolio, गॉट इट। showing them कि Godspeed ये भी कर सकता है आपके लिए. राइट। Again, this is again very important for any aspiring studio who wants to get into this kind of services or development services, or who wants to get into the industry. Your portfolio matters a lot. या एंड आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, मगर वो जीरो भी कुछ ऐसे बनेगा जीरो, राइट? आप एक एक ऑटोमेटिक। एक एक डॉट से नहीं बनेगा जीरो, आपको जीरो के लिए भी एक पूरा ऐसे जीरो बनाना पड़ेगा। सो दैट्स योर पोर्टफोलियो ऑल अराउंड। बढ़िया है, So बढ़िया। वो दिमाग में आया कि यार nobody is doing console work in India as of now, and we thought we took it as a niche area to do, and because of our trust or because of our relation with some of our existing clients, they trusted us. They said कि ठीक है तुम लोग कर सकते हो। तो एक दो प्रोजेक्ट हमने इनिशियली वेरी इंडी प्रोजेक्ट्स किए हमने, जहाँ पे चैलेंज थोड़ा कम था, बिकॉज वी वांटेड टू लर्न कि प्लेटफॉर्म पे सबमिशन कैसे करना है, कैसे किसी गेम को रिलीज करना है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे लोकलाइजेशन फ्रंट से, एज रेटिंग कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें हमने लर्निंग प्रोसेस से सीखा। गॉट इट। And one of our, I would say, very close friends, I can proudly say that they are friends, they are veterans in the industry. Mr. Ken Bird and Mr. John Jones, still they're still in UK. They have West Coast Software करके उनकी company है। I think they supported us a lot in learning,
Whenever we had a doubt, हमारी टीम को जहाँ पे भी concern रहता था, we used to touch base with them. So there were people who used to share the knowledge with us very, happily. So I think that's where the learning began for us. After delivering the first title for us, it was like, then it was open for us. That the market was open for us. That time we knew कि हमने यार Switch पे काम कर लिया या Nintendo पे काम कर लिया, अब Sony हमारे लिए क्या है, अब Microsoft क्या है, let's just start working on it. Yeah. So initial bits में पहले हमने indie titles पे focus किया. Once we were through, once we had a good portfolio with us, that's when we kind of start pitching up to bigger publishers that we can do the services for you. समझा समझा कूल. बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इधर एक्चुअली. जितनी चीज़ें आपने वो बोली ना कि फर्स्ट क्लाइंट के लिए या फिर स्टूडियो के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई थिंक आपसे बात करके ना अभी 15-20 मिनट में आई ऑल्सो वॉन्ट टू पॉइंट आउट वन थिंग विच यू शुड डेफिनेटली डू इज हैविंग दैट ह्यूमिलिटी. बिकॉज आपने भी ये पूरे इसमें 15-20 मिनट में आपने 6-7 लोगों के नाम लिए, which is a which I think is a very rare quality of not forgetting the people who helped you through your journey and being proudly being able to say these names कि बॉस ये था, इसके लिए मैं मुझे ये करने मिला. I think that's something that people should also keep in mind because Yeah, absolutely. वो ही है जो आपको point A to point 0 to 1 आपको ये आपके बेसिक स्किल्स ही ले जाएंगे, बिल्कुल बट आपको 1 से 100 यही चीज़ें लेके जाएंगी जो इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी ह्यूमिलिटी. हाँ जी, हाँ जी. सो गुड स्टफ पाजी. दो स्किल्स के साथ 2-4 और भी ज्ञान दे दिया आपने नहीं, यहाँ पे. वो एक और छोटी सी एक वो है, वो बोलते हैं हम अकेले ही चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया. क्या वो बात. आपके में होना चाहिए कि लोगों को जोड़ना कैसे है आपको अपने साथ, राइट? डेफिनेटली Be it डेफिनेटली. employees, be it clients, be it partners, be it friends, unless आपको support मिले हर जगह से, you won't be able to, take the leap. या एब्सोल्युटली. अच्छा, एक चीज़ है ना जो अगेन सेम यूट्यूब से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पे डाउट होता है. एक तो इन जनरल गेमिंग में किसी को एंटर करना होता है ना, तो सबसे पहले मुझे यही पूछते हैं कि इस मेरी सैलरी क्या होगी, एंड इट्स वैलिड. आई मीन ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ठीक भी पूछते हैं कभी कभी. इट गेट्स इरिटेटिंग ऑल्सो कि बॉस तेरा पैशन तो है ना कि तू सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है ना. तो बट एट द बैक ऑफ हिज माइंड वो ये भी सोच रहा है कि बॉस मुझे भी मेरे फैमिली को कन्विंस करना है, मेरी सोसाइटी को कन्विंस, मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है. तो आई नीड टू नो कि मैं कितने पैसे बना सकता हूँ. आप बिकॉज यू बीन इन दिस QA साइड अ लॉट, आप सिर्फ ऑडियंस के नॉलेज के लिए, ऑडियंस को इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से आप बताओ कि गेम टेस्टिंग का स्कोप इंडिया में क्या है. एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द काइंड ऑफ मनी दैट यू कैन मेक. Okay. I think when you start at the very initial level, at a fresher level, at the trainee level, like we call it trainee level. When you start, so at that time, one has to come with an open mind, right? Because आप कुछ सीखने जा रहे हो. अगर आप open mind से नहीं आते हो तो आगे बात नहीं बनती. तो I think most important bit is कि like you said, आपका passion है क्या है यहाँ पे. आप क्या ये करना चाहते हो क्या. इट्स नॉट अबाउट जस्ट फाइंडिंग अ जॉब एंड देन मेरे को जॉब मिल गई मैं खुश हूँ. नहीं, आपको काम भी करना है, आपको डिलीवर भी करना है. व्हेन इट कम्स टू द सैलरी पार्ट, ऑब्वियसली हम जब किए थे तो आई थिंक माय फर्स्ट सैलरी एंड वाज $8,000 एट दैट टाइम. वो भी उस समय भी टीडीएस कटता था यार. And I used to get 5,600 around ये आता था. And at that time we were in Delhi, so imagine दिल्ली में 5,600 रुपए में रहना. So it was a different story at that time. Yeah. But nowadays things have changed. If you ask me, there are a lot of services company in terms of QA industry. I can name some companies as well. In Pune itself, you have Global Step Solutions as well. You have I would say in Bangalore, you have Indium. Pole to Win has opened a office in Bangalore. Keywords has their own offices. Babel Media is there in Delhi. Keywords again owns Babel Media now. So there are a lot of big players nowadays in the QA services companies as well. But we also have to at the same time also see that because of the number of studios starting up in India, number of product companies, product studios that have started in India,
there is ample opportunity for everyone, every single person to get inside, get into the industry, Right. be it from the testing level, be it from a junior designer point of level, but from the educational background. But सभी के लिए opportunities है यहाँ पे, so it's not just limited to service companies. Yeah. Every product company needs QA. Correct. So that's how the profile is spread across QA for all the domains, right? Correct. If you ask me salary, I think at the, I would say, initial level nowadays people are paying around, I would give monthly, if that's fine, monthly 18 से 20,000 आपको monthly at the initial stages मिलेगा आपको. Hmm. And then there are companies who pay you over that, because when you work for extra hours, when you do some good work, there are commissions, there are incentives Yeah. around your work as well. What kind of quality you deliver, what kind of work you deliver, so उस पे भी incentives होते हैं companies में. So that's the initial bracket, I would say. And then growing from that level, from the junior level, is up to you. How you grow, how do you groom yourself, how you learn things. Yeah. But पूरे इंडस्ट्री में इफ यू आस्क, मेरा टेस्टिंग को लोग एज अ, आई वुड से, एंट्री पॉइंट भी मानते हैं गेमिंग Yeah. के लिए. Yeah. बिकॉज अगर आपका पैशन इंडस्ट्री में है, आप अगर एज अ टेस्टर एंटर करते हो, एंड especially if you're working with different games, so you get a lot of knowledge about different games, different genres of the games as well. Yeah. And if you're working in a product company, so there is another opportunity for you कि आप as a tester आप start करते हो, but how can you contribute to your own company's game. Correct. So be it from improvements, be it from your suggestions, design side से भी उनको suggestion दे सकते हो. And let's say, because we have seen, personally I have seen कि मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो programming expertise के, their background is into programming, but they have started as tester. Yeah. And if at our studio, because we do work on our own games as well, we do work on porting as well. So what we do is कि भाई तेरे पास ये expertise है यार, तू यहाँ क्या कर रहा है टेस्टिंग में, you jump into programming side. Right. Right. We will give you the training internally. We'll give you 3 months to show, Yeah. learn from our own seniors as well, and then you take the next leap. In our studio, you won't believe, there are testers, or there are people from the testing team who are currently working as product owners, who are working as producers, people who have taken leap from testing to game designing. So it's you can take this as an entry point for sure. But Yeah. in testing itself, obviously you start as a junior role, you go to the senior role, then senior tester, QA manager, QA director, VP QA, studio manager, खुद का studio start कर लो. So like I am here यार, QA से आया हूँ यहाँ पे. Yeah. Yeah. So मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, कुछ भी कर सकते हो Yeah. आप. या सो 18-20 के ब्रैकेट से आप करोड़ों तक जा सकते हो, टू बी To be fair, फेयर, है ना. yes, yes. और दूसरी चीज़ आपने करेक्ट बोली कि मुझे भी ऐसा भी लगता है कि इंडिया में जो गेमिंग इंडस्ट्री सेक्टर है ना, वो अभी इस स्टेज पे है जहाँ पे ये जो टैलेंट है ना, टैलेंट को बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए फाउंडर्स रेडी है. बिल्कुल. क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लाइक इवन हमारे स्टूडियो में भी, और मतलब मैंने जितने अपने लेवल में जितने स्टूडियोज चल रहे हैं, आई हैव हर्ड फ्रॉम देम आल्सो कि अगर कोई आता है, मेरे पास तो ऐसे 2-3 बंदे आए थे जो आर्ट के इंटरव्यू के लिए आए थे, और वो आज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. क्योंकि फर्स्ट वीक में मैंने उसको बोला कि भाई तू आर्टिस्ट नहीं, तू प्रोग्रामर. नहीं, बट बिकॉज सी टैलेंट के लिए, स्किल्स के लिए मुझे लगता है कि ये करेक्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है. अभी मुझे लगता है 3-4 साल बाद थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जब भी स्पेशलाइजेशंस इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए भी, कि बॉस तू नहीं, ये ही चाहिए हमें. बट ये एक्सपेरिमेंटेशन, जो जंप ऑन जंप करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आई थिंक ये स्टेज पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है. बिल्कुल. एंड इफ पीपल कैन इवन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अंदर आके फिर देन आई कैन आइडेंटिफाई माई स्किल सेट, आई कैन आइडेंटिफाई माई पैशन एंड देन मूव टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन. क्योंकि ऐसे बहुत भी लोग हैं, मतलब मेरे एज के भी ऐसे लोग हैं जो आज फाउंडर्स है, बट वो स्टार्ट किए थे एज अ गेम टेस्टर, बट दे एक्सेल्ड एट गेम डिज़ाइन. Absolutely. एंड मुझे ऐसा लगता है गेम टेस्टर को गेम डिज़ाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है. बिल्कुल, हम क्यों, खुद यही बोलते हैं यहाँ पे. है ना, क्योंकि उसको जो समझ में आता है ना गेम में, वो एग्जैक्टली वो सिंक में होता है जो गेम डिज़ाइनर एक एंड पे सोच रहा होता है, और ये यूज़र पर्सपेक्टिव से उसको सोच रहा होता है. Exactly. On a granular level, in छोटे लेवल पे अगर हम सोचते हैं, तो फाइंडिंग बग्स इज व्हाट अ टेस्टर हैज टू डू, राइट? Yeah. गेम में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, दैट इज व्हाट योर जॉब इज. बट इफ यू थिंक बियॉन्ड दैट, एक्चुअली एक टेस्टर का मेन जॉब यही है कि वो प्लेयर की तरफ से उसको सोचना है. करेक्ट.
बिकॉज यू आर रिलीजिंग द गेम फॉर अ प्लेयर, आप वो गेम मार्केट में प्लेयर्स के लिए ला रहे हैं। Right. तो जब तक आप प्लेयर के पर्सपेक्टिव से उस गेम को नहीं खेलोगे, Yeah. क्या अच्छा है क्या बुरा है या क्या अच्छा लग रहा है, एंटरटेनमेंट फैक्टर है कि नहीं, गेम की डिफिकल्टी अच्छी है कि नहीं, गेम कितना डिफिकल्ट हो रहा है, क्या मेरे को इसको खेल के मजा भी आ रहा है कि नहीं, या यहाँ पे ये एलिमेंट, यहाँ पे ये पिलर अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट होगा या थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा ये लेवल। सो Right. ये सारे इनपुट्स भी आई थिंक एज टीम टेस्टर्स के साइड से आते हैं। Yeah. One thing is that I request all the studios who are into this, in our field, to at least get QA involved into the production cycle from the start itself, Yeah. because you never know the kind of inputs these guys can bring you. Right. Right. Absolutely. All right, पाजी, जाते जाते एक दो चीज़ें और। अभी रिसेंटली हमने सुना एक्विजिशन हुआ। हाँ। सरकार बिक गई। नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही जानना है कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। मुझे श्योर सिर्फ श्योर, इतना ही जानना है कि एंड ऑफ द डे सब लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं चीज़ें, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। राइट? बट अब मैं एक स्टूडियो चला रहा हूँ, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ अगर, तो ऐसी एक दो चीज़ें क्या है जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए इफ़ आई हैव अ विजन टू गेट एक्वायर्ड समडे? आई थिंक एक जो बहुत प्रेवलेंट है आजकल मार्केट में, दैट्स अ वैल्यूएशन गेम। सो काफ़ी लोग वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि मेरी कंपनी लेट्स से मिलियंस में वैल्यूएट हो, दे टेक मनी फ्रॉम मार्केट एंड ऑल दोस थिंग्स। हमारा, दिस इज माई फ्रॉम माई साइड आई कैन से, लाइक हमारा शुरू से एक मोटिव था कि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करें। राइट। Rather than running our company on investor money, या। we should run our company on our own money. करेक्ट। सो दैट इज वाई, जब लोग बोलते थे यार तुम सर्विसेज क्यों कर रहे हो, खुद के प्रोडक्ट करो, बट हमारा आइडिया था कि हम करेंगे प्रोडक्ट, बट पहले स्टेबल हो जाए, राइट। and then we can use our own funds to do the game. So I think for every acquisition, I think those profitability matters a lot. Nobody banks on a not so profitable company. या। They might, yes, they might bank on your product, but again, product also has to have specific KPIs which actually they should see कि आप achieve नहीं कर पा रहे, maybe because of some odd reasons. या। But when they give you funds or they acquire you, they provide their own skill sets they add their own skill sets to your product, then those KPIs will be achieved much easier. So I think that's where there are different factors, I would say. From a services company, I can say, or from even from a product company, profitability matters a lot. राइट। अगर आप प्रॉफिट वाली कंपनी हो, यू मेक गुड प्रॉफिट्स, यार लाइन लगी रहेगी लोगों की, या। and then the next is the talent and the skills that you have in your studio. राइट। For us, like for example, we had the advantage of working onto the console platforms, which no other studio in India does. To the extent that we are doing, people are doing it, but to the extent what we have done in the past and what we are doing, nobody was doing it. So we when we came on board with somebody, we brought, let's say, 50 programmers जो उनको जो कंसोल पे काम दोगे वो करेंगे। या। या। उनको आप जो जितने आप ट्रिपल ए गेम बोलो, आप डबल ए बोलो, या स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कोई भी गेम बोलो, वो करके देंगे। So गॉट इट। we brought that talent pool along with us. So I think profitability, EBITDA बोलते हैं जिसको, है ना, अर्निंग बिफोर इनकम, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अगर उसको डिफाइन करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर या। आप अपनी कंपनी एक्विजिशन के हिसाब से सोचते भी हैं तो। या। बट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस, आई थिंक एज अ एंटरप्रेनर, एज अ फाउंडर ऑफ दैट कंपनी, यू हैव टू फर्स्ट, खुद से भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, you know because obviously when we go to the market and I'm open for acquisition, you will get buyers. या। या। If you are a good company, if you are a profitable, you will get buyers, but what is the right fit for you, what do you actually want from this acquisition is very important. करेक्ट। So अगर आप अपने खुद के बिजनेस के KPIs भी डिफाइन करते हो, और आपको पता है कि आप वो इस डिसीजन के बाद आप वो अचीव करने में मे बी आपको और अच्छी हेल्प मिलेगी, आई थिंक दैट्स व्हेन यू हैव टू लुक इनटू दिस साइड. But before that, I would say, you have to work on your profitability, get into a profitable state. Valuation के पीछे भागना चाहिए, but ऐसा नहीं कि अंधा भाग रहे हैं, और because I see a lot, I mean, हम obviously इतने सालों से देख रहे हैं हम लोग. हाँ, और वो साइकिल है, वो विशियस साइकिल है वो। Yes, yes, You yes, yes, just keep on raising to, for that valuation, and then yes, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आज जो अलग नॉन गेमिंग प्रोडक्ट में भी है, स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल, बट दे हैड टू कीप ऑन बिल्डिंग दैट मशीन। yes, yes.
So वो रहता है, but I personally I feel like profitability, talent pool, this matters a lot, Yeah, especially when you are a small company. आपको ज़्यादा raise नहीं किया है आपने market से, yeah, and something that I've seen in, I mean, this is again like I won't say that in the Indian standards point of view, but too often we have seen like founders are paying themselves very heavily. Investors से पैसा लेके आप खुद को ही पैसा दे रहे हो यार. yeah, So that also kind of is a kickback. When somebody is looking at your books, that yeah, also kind of acts as a kickback sometimes. correct. So because that shows कि you are in here for money, you're not here for passion, or you're not here for taking your company to the next level. Yeah, You're yeah, in here कि मैं तो पैसा बना रहा हूँ. yeah, yeah. So वो No, भी वो but सारी चीजें छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती no, है. no, 100%. But on the contrary, I also think कि अगर तुम पैसा बना रहे हो, फिर तुम्हें कोई नहीं फिर बिल्कुल पॉइंट आउट बिल्कुल करने वाला है. अगर तुम बिल्कुल. कंपनी के लिए पैसा बना रहे हो हाँ जी हाँ जी. अच्छा खासा, देन तो बॉस यू डिजर्व ऑल्सो. दैट इज वाई पाजी हम लोग यहाँ है अभी. कूल कूल कूल. जाते जाते एक सिर्फ लास्ट कुछ एडवाइस देनी है ऑडियंस को, मतलब मेजॉरिटी हमारे गेम डेवलपर्स, गेम एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स है. सो वन थिंग दैट यू जस्ट वांट टू टिप. आई थिंक व्हेन यू आई मीन हम लोग काफी टाइम से बोलते हैं कि थिंक ग्लोबल वाला जो फंडा है, बट इफ यू आर एन इंडियन स्टूडियो हु इज स्टार्टिंग अप, हु वांट्स टू गेट इनटू दिस स्पेस, आई थिंक फोकस ऑन मोबाइल. It's not wrong to focus on mobile at the initial stages, because that is where your user base is. या We, I mean, India, as we all know, is like one of the biggest consumers of the smartphones, right? या So यहाँ काफी काम है, और यहाँ सभी के लिए काम है. तो आई थिंक ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, कंसोल पे काम करना है, बड़ा ट्रिपल ए बनाना है, बट ट्रिपल ए इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू पीसी और कंसोल्स. आजकल मोबाइल पे भी ट्रिपल ए, या राइट. सो आप काम ऐसा करो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, बट अगर आपको मार्केट कैप्चर करना है, अगर आपको अपना एक बेस सेटअप करना है, तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन मोबाइल फर्स्ट. करेक्ट करेक्ट. ऑसम राजी, थैंक यू फॉर योर टाइम. बहुत ही फन कॉन्वर्सेशन था, मज़ा आई आया. होप सो भाजी. बात मेरी मान तू बात न माने दर्द है तो गम है बात तू बम पर रे तेरे साथ हैं हम बिखरे